So guys, we will be starting, as you know, this is the insight session for your team. So in this session, we will be talking about your idea, what is the current stage, some basic details, and how we are going to take it forward. So that's what the session is all about. So very happy evening to everybody, and as always, Yerkai Tune, and thank you for joining after a long break. I think many of you have had exams. You've been very busy with the Smart India Hackathon and all of that going on. But happy to see you guys here today, joining us for Insight Session 5. And myself, Desika Prabhakar, the founder and director of the Purpose Foundation. And we have Lakshmi, our COO, as well. So the first team today is going to be Green Future. So Green Future team, who's going to talk? Janadashni, you will talk? Or you want someone else to talk? Who's going to talk? Janadashni will talk. Can you hear us? Yeah, okay. So Yes, Janadashni, please tell us about your idea, like what is the problem solution in one sentence. First, explain to us what is the problem you're solving. yes, ma'am. Yeah, you can go ahead. Can I send the PDF in a group, ma'am? Not necessary. We are going to just have a discussion. I have all your details. We're just going to have a Okay. discussion and then we're going to plan what we're going to do. So just generally, you can briefly explain one line. That's enough. Okay. Yeah. So what is the problem you're working on and what is your solution? Hi ma'am, this is Puvitarni. I'm going to explain. Okay. Our problem statement is textile waste management. Okay. We are adding some things to our our solution. Okay. So what is your solution? You're working on. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா அந்த டெக்ஸ்டைலுக்கு வந்து நாங்க ஒரு பின் கொடுக்குறோம். அந்த பின்ல வந்து அவங்க டெக்ஸ்டைல் வேஸ்ட்டை வந்து அவங்க அதுல வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து அது வந்து ட்ரக் டிரைவர்ஸ்க்கு வந்து அதுல கூட கனெக்ஷன் இருக்கும். அந்த கனெக்ஷன் மூலியமா வந்து ட்ரக் டிரைவர்ஸ் வந்து அந்த இது எடுத்துக்குவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. மேனுவலா தான் அவங்க போய் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதனால வந்து நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆச்சு. அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து காஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. டெக்ஸ்டைல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து தெரியல எங்க வந்து ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி அவங்க எதுக்குமே தெரியாததுனால அவங்க வந்து கொண்டு போய் அந்த டெக்ஸ்டைல் வேஸ்ட்டை வந்து பேர்ன் பண்ற மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அதை கரெக்டா வந்து பொல்யூஷன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதை வச்சு. அதனால வந்து நாங்க இந்த சொல்யூஷன் கொண்டு வரோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்க எப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி நாங்க ஒரு சொல்யூஷன் வச்சிருந்தோம். ஆனா இப்ப வந்து நாங்க அதை எங்க வேர் ஹவுஸுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவோம். அந்த வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து ஒரு சென்சார் வச்சு அதுல என்னென்ன டைப் ஆஃப் கிளாத்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்க அதை செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் கொடுப்போம். அதனால வந்து ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்தெந்த டைப் இப்போ காட்டன், பாலிஸ்டர் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் வேஸ்ட் இருக்கு. நாங்க அதை வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு கொடுக்கறனால ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அதை நியூ ப்ராடக்டா மாத்திக்குவாங்க. இதனால வந்து டெக்ஸ்டைல் ஓனர்ஸ்க்கும் இதனால ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸும் இதனால ப்ராஃபிட் இது பண்ணுவாங்க. இதனால பொல்யூஷனும் இல்லாம இருக்கும். அவங்க வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பேர்ன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இவ்வளவு நாளா. அதை வந்து பண்ணாம இருப்பாங்க. அப்புறம் சாயில்ல தான் வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க, ரிவர் வாட்டர் பாடிஸ்ல போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதனால வந்து ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். இதனால மணியும் ஏர்ன் பண்ணலாம் அவங்க. இதுதான் நாங்க வந்து நாங்க கொடுக்க போறோம். Okay, understood. So what is the current stage of your product? Like how far have you developed it, or what is the current stage? Still in idea stage, or you have developed some product? ஹேக் ஃபார் பர்பஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தோம்லங்க மேம். அங்க இருந்து எனக்கு சண்முகம் சாரோட காண்டாக்ட் எனக்கு கிடைச்சிருந்துச்சுங்க மேம். டியூ டு சம் செமஸ்டர் இருந்துச்சு. ஸோ சம் இன்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தனால எங்களுக்கு கரெக்டாக அதை குத்ரூ பண்ண முடியல. ஸோ ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ் முன்னாடி சார்கிட்ட கேட்டபோது அவர் இந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ டெக்ஸ்டைல் யூனிட்ஸுக்கும் சரி, ரீசைக்கிள் யூனிட்ஸுக்குமே சரி, வாட் ஆர் அப்டேட் தே நீட், அப்புறம் ரியல் டைமோட எக்ஸிஸ்டர் எது இருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் ரியல் டைம் டேட்டா நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுங்க. ரீசைக்கிளிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரீசைக்கிளிங் ஒரு 15 யூனிட்ஸ் இருக்கா, அந்த ரீசைக்கிளிங் யூனிட்ஸ் என்ன அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி அவங்க கலெக்ட் பண்றாங்க வேஸ்ட்டை,
டெக்ஸ்டைல் வேஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆகட்டுமே இல்ல ரீசைக்ளிங் யூனிட்ஸ் இருக்கட்டுமே, அவங்க எப்படி கலெக்ட் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கறாங்க, ஹவு தே ஆர் யூசிங், அந்த வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணி எங்க போடுறாங்க, அதை ரிசர்ச் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு 15 யூனிட்ஸ் வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணி கேட்டு பாருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் மை டீம்மேட் சொன்ன மாதிரி ஃபேப்ரிக்ஸை வந்து நீங்க தனித்தனியா பிரிச்சு அவங்க எந்த ஃபேப்ரிக்ஸை வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்றாங்க, எதை மோஸ்டா அவங்க யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. Okay. So how far have you completed this? Now you have completed or you have not started this work? Ongoing. Ongoing. Okay. Okay, ma'am. Okay. So currently, how many members are there in your team? 4 members, ma'am. Okay. And all of you are which year? Third year. Third year, ma'am. Okay. Which department? ECE department. All of them are ECE. Yes, ma'am. Okay. So what is your interest? Do you want to take this as a final year project or now you are just doing it as a project No, ma'am. for Final now? year project. Final year project. All of them are interested to take this? Yes, ma'am. Are interested to take as final. Okay. So individually, like all the 4 members are there now in the call? No, ma'am. One person how is many not available. One is not available. Okay. So generously, what is your plan? You want to go for a job or higher studies, or you want to set this up as a company? Like, what is your idea after college? The thing is, வந்து என்னன்னா What is your இது interest? வந்து Yeah. மேபி இதை ரிசர்ச் பண்ண போகையில இதே சேம் கொஸ்டினை வந்து சண்முகம் சார் கேட்டிருந்தாரு மேம். ஸோ அவங்க ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி என்னன்றது தெரியும், அது மேபி பாசிபிளா இல்லையான்றது தெரியும். மேபி இந்த ஒரு 2 monthsக்குள்ள நான் இந்த இதை கரெக்டான ஒரு இது எடுக்க முடியும் மேம். No, but that is okay. You don't have to Job, decide. yes ma'am, job போறேன். So it's not about, see, your interest only I'm asking. You don't have Yes, to ma'am. tell me if you're going to take this as a startup or something. I'm not asking that. I'm asking Yes, what is your interest? Your interest is to do job, or your interest is to do business? Your interest is to do higher studies? Like your interest is to teach? Like that, you will have your own plan, right? I'm asking you that only. So that Yes, is the thing. So in that you want to go for job and get some experience, yes, right? ma'am. Yes, ma'am. Job is the first preference. Okay. What about others? Puvi, Dharni, what about you? I want to teach, ma'am. You are interested to teach. Very good. Okay. So after this, are you interested to look for some teaching sort of jobs, or you want to do higher studies for, like, to pursue teaching? I want to be, as of now, I'm a campus ambassador. And Okay. for that, I have to learn about entrepreneurs. And I have to teach many students to what is entrepreneur and how they became entrepreneur. Okay. Very good. So after this, like teaching, as in you want to be like a college professor, you want to be like a school teacher, like what is your, or like a business, MBA sort of thing you want to learn and then become like a professor in, MBA sort of thing. Like what is your idea? I'm asking. First, I want to go to job. And I have to make KARAS, MBA KARAS, and then for a teacher or professor, whatever. Very good. Okay, good. Who else is there from your team? Vasantapriya. Vasantapriya, what about you? What's your idea after college? You want to go for a job, or you want to go for higher studies? You want to do business? What is your interest? Good evening, ma'am. Good evening. And So what is as your of interest? now- Yeah. As of now, I'm planning to pursue my higher educations. Like, I don't know how to say that, but I have sort of interest in some fields. So I thought I can continue my higher education in those fields. Any one I will choose from them. Okay. So Okay. Very good. Okay. So Thank you, for ma'am. now, what I've understood from your team is like this is for now a project for an experience you are doing, right? Like this can support your future job when you go apply, for placement, all of that. This can help you. So we are going to take it in that way, and then we're going to look at it. So for this particular project, like your product is mainly like a advanced sort of a textile waste collection system, and also to
recycle, you're connecting them with the people. This is what you're trying to build. So this is a very, again, it's a useful product, and there is no denying that. But the main thing is, like Shanmugam sir told, market research is very important. That is the first step you have to do. So even if you give the sensors to the bins, people, like how is the people attitude towards this sort of thing is very important, because how are they going to put it in the proper segregation bins, or what are you actually analyzing in the sensor? Is it just the bin is full, then it goes to the message goes to the truck collector, they come and collect it, or are you also checking the colors? Are you doing all those sort of things? And who is going to buy this? Like if you do the bin and the sensors also, like they have to buy it, like they should be interested to buy and put it in their factories, and teach the whole workers to use it, and then only like it will become actually functional. But as far as the current scenario is concerned, that much of adaptation, like people taking up this sort of thing, is not much workable at the moment. So what you can do is you can research on the wastes available, and if they have a lot of waste, like say this much tons of this color of waste we have, means they can put it like a request somewhere. You can build a platform, or you can like how you're putting the sensor, the hardware part, you can do a small a signaling sort of thing, where okay, this when once this request comes, then they go and collect it, sort of thing. Initially without the hardware, maybe you can try, or just do like a mock-up. That's what I'm trying to say. Instead of building the whole product and then testing it, first you have to go do your market research, then you have to build the minimum viable product. That's what we learned in the session also. You don't have to do the whole product. You should do just a very small, simple, easy to build version of the product and see how it works. Because as you're telling, it will go to the landfill, or they will burn it, or they don't know where the recycling center is, and earning more profit. So I don't know about who is going to earn more profit here, because usually the textile waste, if it is only segregated and it's of good quality, then only they will give the appropriate price for it. Otherwise, it's a little bit difficult. So what you have to do is you have to talk to the textile industry as well as the recyclers, both, like Shanmugam, sir mentioned. It's exactly Yes, what ma'am. it is, right? So what you have to do is go talk to this side. You talk to 10 people. This side you talk to 10 people. Like how they are dealing with the textile waste currently, how much they are generating, color wise and cloth wise. Is it more of cotton? Is it more of plastic, polyester? What is the type? What is the color? And what are the quantities? You have to analyze that with some 10 to 20 industries. Then you have to go to the recycling units. How many recycling units are there, and how many are there nearby, and what is the cost of collecting it and going, and what they are doing with that. So this data, if you get, then you can make a very good product out of it later. First, connecting them itself is a how do I put it? That itself is a big thing. If there are already platforms who are doing it, you can look into that also. So there are, I think, some trading platforms where you can post whatever waste you have, and somebody will come and collect it. So those kind of things also you can look at. So I think your team can work on doing some market research. You make an Excel for us with 10 to 20 industries, textile industries, the quantity of waste, the type, the color, the material, and what they are currently doing with that waste. All of this details, you go in person or you talk to them, get the right details and put it. You select just one particular region, maybe your area or Tirupur or Tamil Nadu or whatever. Just select one region and then get this detail. Then you get the detail of the recycler. Whoever is recycling textile waste, how much they will be paying, how much quantity they're expecting, and what they're doing with that particular textile waste. Is it actually recycled properly? So these things, after you figure this out, then we can work on the hardware, like what sensor to put,
and what data you're going to generate, and if this is needed in the bin, or if you can make it like just a sensor in some other way, in simple way. All these things we can decide and come up with a minimum viable product plan once you do this market research, so you'll get a clear idea. Have you got what I'm trying to say? I hope you understood. Yeah, ma'am. You got an idea, right? Okay. So you can work on this. If you have any doubts, you can ask us, and then we will help you out with that. How much time are you guys spending on this every day? Like, that is the last question I have. Like, approximately how much time you're spending for this project? Like, you have meetings every day, you discuss about this, or weekly once, or whatever. What is the time you spend? Weekly once, ma'am. Weekly once you're having. And Okay. yesterday also we have applied for MSME hackathon, ma'am, 4.0. Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, good. So again, apart from applying to many hackathons, also side by side work on your market research. That Yes, will ma'am, make sure. your product Work on very it. strong. So you do Yes. this market research and you give us this as soon as possible within the next 10 to 15 days. If you give us, then we Yes, can ma'am. work. The next 2 months is the support, October and November. So November end, we will be closing the batch, and we will select the top 10 teams who will be getting, who will pitch in front of the investors. So the next 2 months is when you will actually get the support to make your product. So next 10 days or so, if you work on it and come up with some data and some understanding, then we can work on building the product. So you take some time and then make this research work first. This is what I will say. So talk to both textile industry and also to recycling industries. Then only you will get a very good idea. Okay. Hi, Subiksha. Is your team here? Yes, ma'am. We are three of us are here: Rachna, Balaji, and myself. Okay, cool. So, Subiksha, in one line, please tell me about your idea and your solution. Like, what is it you're working on? Uh, and we are working on the project of smart agriculture using fuzzy system to solve the difficulties which is faced in the farm. And I want Balaji to Sure. proceed after this. Okay. Balaji, please go ahead. Ma'am, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, our Yes. project to smart agriculture, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Yes. வாட்டர் பம்ப் மற்ற எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுல இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற டெக்னாலஜி ஃபுல்லாக வந்து இன்டர்நெட் ஐஓடி பேசுறேங்க மேம். அதாவது ஒரு ஃபார்முக்கு வந்து நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணுறோம்னா அந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் ஒய்ஃபை இருக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து ரெண்டாவது டைப் வந்து ஜிஎஸ்எம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து அதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணி பண்ணலான்னு பண்ணிருக்கோங்க மேம். இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணால் மந்த்லி ரீசார்ஜ் பண்ணணும். அடுத்து வந்து ஒய்ஃபை அவைலபிலிட்டி வந்து அந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஜிஎஸ்எம் போனாலும் நம்மளுக்கு வந்து மந்த்லி சிம் கார்டு போட்டு ரீசார்ஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக நம்ம ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி ஃபார்மை வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணலான்னு இருக்கு. So, farm automation, correct? Yes, ma'am. Okay. What are all the features you're automating? Which farm are you targeting? Like, is it particularly one particular thing, like some tomatoes or rice, or like what are you automating? Is it only water? Like, what is the thing? Not for only particular crop. It's common for all agriculture crops. Example பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு கிராப் வந்து நம்ம ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மோட்டார் வந்து டேர்ன் ஆன் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரிங்க டெம்பரேச்சர் வேல்யூ. அடுத்து வந்து only water. மேம், நாட் ஓன்லி வாட்டர் மேம். அடுத்து வந்து what else are you automating? Like nutrition level or pH. Sorry? Like nutrition level, like pH. I'm just asking. You are monitoring nutritional level also and taking care of that, like FD.
மேம் நாட் நியூட்ரிஷன் லெவல் மேம். வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு அது எப்போ இன்சஃபிஷியண்டா இருக்கோ அப்போ வந்து மோட்டர் டர்ன் ஆன் பண்ணி ரன் பண்ற மாதிரி மேம். அண்ட் ஆல்சோ ஆட்டோமேட்டிங் த வால்ஸ் மேம். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஏரியாவும் வால்ஸையும் வந்து நம்ம மொபைல் மூலியமாவே ஆட்டோமேட் பண்ற மாதிரி ஐடியா. Okay, so in agriculture, you want to automate the motors, like for the water and a moisture analysis or all of this. Basically, you want to control it through the phone with Wi-Fi. Not by Wi-Fi, ma'am. It's by radio frequency, FM, frequency modulation. Okay. I think I have some idea now. Okay, so first of all, which year are you all studying? All members are third year, ma'am. All are third years. Third year, which branch? Triple E. All four are Triple E. I think water with radio frequency, you said, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Definitely. Okay, all of them are Triple E. Yes, ma'am. Okay, and what do you want to take this up as a project for your final year? Like, what's the plan? No, ma'am. We have another idea for our final year project. Okay, what is that project like? Are you all working on it together, or is it a different thing? Like, what is it? Ma'am, two boys are working on different project for our final year, but our teammate having which idea, I don't know, ma'am. Okay, so but nobody is going to work on this idea for fourth year, correct? I think not for fourth year. Okay, done. So each of you tell me, what is your plan after college? Do you want to go for job or for higher studies, or you are interested in business? So each of you can tell me one by one. I'm having idea about to get job in core company, and also side by side become an develop me to become an entrepreneur. And by source, I need to be job and become an entrepreneur. Okay, so first you want to do job, then you want to get some experience and become entrepreneur, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Job first. Okay, what about Subiksha? Basically, I'm interested in programming, so I just want to move to that IT sector, and after gaining some experience, knowledge, and after that, I want to think about startups and being entrepreneur, starting a business. Okay. I want to gain experience and the money to sustain after that. Okay. Who else is there in the call? Who else is there in your team? Rachna. Rachna, what about you? What's your interest? I need to get placed in a core company, ma'am. Placed in core company. Very good. Okay. Someone else is there in your team? That's all. 3 of you. Is there anyone else? Only 3 of us, ma'am. No. Okay, guys. So let me tell you. I am assuming this project is now for some experience you're doing. Okay, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To learn something. Okay. So all of you are going to focus on jobs, and all of you are Triple E, right? So you are interested in either programming or in core in electrical electronics sort of thing you're working on. So either from this project you have to learn more about your electrical components and building products in that, and analyzing that, or you have to build some software and learn that aspect. So that will give you experience. But let me tell you this, this smart agriculture, even in our Hack for Purpose teams, we have almost like more than 4 or 5 teams, similar thing they're working on. Okay, I've given the similar input for everybody, and the same thing only we're going to tell you also. If you are actually very serious about only smart agriculture, first you confirm that and tell me, right? So this smart agriculture thing is a very, how to put it, like it's here and there sort of a topic. If you are very passionate about it and you want to build a product means, then that is a different case. But if you are doing only for experience, my personal suggestion is you don't need to do it in this field. There are many problem statements which we have, which you can work on and solve it for us and give, right? So this is the first thing I want you to think about.
If you are really very interested in smart agriculture, or if I give you some other electrical based and software hardware based product which you can work on and solve that and give it to us, then that will be very useful. That also is needed by the industries, because we work with a lot of industries, we collect a lot of problem statements from them, and it will be a real time thing that you're working on, right, for the next 2 months. So that would be a very real time experience, and it will be useful for you, your profile, everything. So think about this one. Next, if you say, no, ma'am, I want to do smart agriculture, means, as I told you already, more than 4-5 teams are working on the same thing. And automating water and automating it with any sort of frequency, anything for that matter, it's a very sort of how do I put it? Many people are working on it. That's all I would say. So again, it's like so many people are working on it already, and there are a lot of solutions already there. The main there are challenges as well, that you need a lot of data to sort of test it, and then you need to go and tie up in the field to optimize the product, and to actually sell the product and see if it's usable on the ground. Realistically, just for experience, this is not the ideal project. That's all I would say, very in simple terms. So first you guys decide if you want to do this project. Okay, then you tell us if you are very sure about this. What we will do is, so one of the teams is working on particular mushroom sort of agriculture, and they want to automate that or make value added products out of it. Like one of them is working on that, other team is working on only tomatoes and only specific vegetables, how to optimize that for higher yield, and different seasons, different temperature, different moisture analysis, nutrient analysis. How do we do this, and how do we automate it, the whole process that they are studying. So that itself is a huge topic. So you have to pick one particular area. If it's one crop also, it's fine, but one particular area, you pick that area. What is the exact challenge in that area? You have to go and talk to the farmers first, and talk to the people who own very big farms or something, understand where they are actually struggling, then fine tune the product, and then come up with building it. So this is the path. First you have to do your market research, if this product is actually needed or not, or what is the real problem. When you talk to them, they'll say, for tomato this is what we are facing, for sugarcane we are getting a lot of pests. So you can make something which can identify that pest or remove that pest. Something, I'm just giving you an example, right? Each of the crop has its own problems. So you can just solve one crop problem itself, it's a big thing. So you have to focus specifically on one thing, understand what is the reality of the problem, talk to the people who are growing that particular thing for years, and who own farms or who are farmers, whatever. You go talk to them, understand the problem, then you come up with the problem statement, like this is where they're struggling, they are not able to grow it to a certain height, or this is the reason they are not getting enough water here. So shall we design a sprinkler system in a different way for tomatoes, a different sprinkler system, something. I'm just giving you examples, right? Like that, you should know the specific problem that this particular crop has been facing. So then if you solve it, it's very, very good. And tomorrow if you go to an interview and they ask you why you did this project also, you can actually say like, I actually spoke to people, understood the problem, and we made this solution from scratch, and we spoke to them, and then we built it. Then they will also get a very good impression about how your mind works to solve a problem, right? So either you have to do that, or you have to take like what we have already as problems and then solve it. So what I want your team to do is first work on this, if you want to do this project, or if you want to do whatever project we give you, right? You choose this one. Then I also want to know what time you can spend on this every day, or how much time you are spending on this every day. I want to know that roughly. You can tell me that. Weekly 2 days. Weekly 2 days. Okay.
So let me tell you, if you are working with us, it will be like an intern sort of thing, no, for that particular company, for the particular thing. So daily you might have to spend some time at least, because weekly they'll have some discussions and they'll give you inputs. All these things will be there. So you should think about it if you are interested. If you are not interested in that, you just want to do something like just for experience, then we will give you some we will ask you to take one particular thing, go talk to some 10 farmers or 10 people, or as I told you, take that, then solve the problem for that. For that, what you need, like what sensors you need or what is the plan, that we will help you out. So this is the thing for you guys. Do you have any other questions or any doubts? No, ma'am. We actually get what you are saying, and we'll talk and update you about which we have to do and what are we going to do. Yes, very good. So Thank you, ma'am. because the same thing, I think another girl, Kalpana, was also doing the similar thing. But now she's texted us. We are going to do an internship with her. They have given me the timings, everything. So they are going to focus on a particular internship with another company. So you guys can also join, or we'll give you another internship for another. So 2 projects were there. One I've given to her, so one I can give to you. So like that, we will split and give it. So you discuss with your team, and then we'll give a certificate at the end of it, like you have contributed this and all of that. So it will be useful for your placements also. So this is pretty much it. You guys work on it and let me know. Okay. So thank you so much, Subiksha and team. Good evening, ma'am. Good evening. Can you hear me? Yes. Yes, ma'am. Okay, Mantosh, please tell me one line about your आपका आइडिया क्या है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक लाइन में आप बता दीजिए. मैम डोर स्टेप मैकेनिक सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे. डोर स्टेप मैकेनिक सर्विसेज, ओके. तो आप एक सर्विस जैसा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं? ये सर्विस जैसे कि ये अर्बन क्लैब कंपनी है ना, तो जो अर्बन क्लैब कंपनी, हाँ नाम सुने होंगे शायद आप. हाँ. तो वो कंपनी जो है वो सिर्फ सर्विस देती है, वो सिर्फ रिपेयरिंग काम करती है ना. तो मेरे में रिपेयरिंग काम नहीं रहेगा. जैसे कि आप कोई घर बनवाते हैं, तो उसमें जो आप लाइट करवाइए, प्लम्बिंग करवाइएगा, तो लाइट प्लम्बिंग कभी कोई मैकेनिक चीज करवाइए, जो मैकेनिक काम करती है वो करवाइएगा. तो उसमें क्या रहेगा ना मैम, जैसे कि आप एक घर है तो घर का फोटो जैसे अपलोड किए, तो अपलोड करने के बाद ना आपको ना ऐप पे दिख जाएगा फोल्डर, आपको कौन सा टाइप कैसे करवाना नहीं करवाना है, वो 100% उसी फोल्डर में आपको दिख जाएगा. एक ऐसी सर्विस लाएंगे जो कोई नहीं ला रहा है इंडिया में. ठीक है, ओके. तो अभी कौन सा स्टेज में है, और अभी आप कॉलेज खत्म किया या अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी मैम 3rd ईयर में है. 3rd ईयर, कौन सा ब्रांच है? मैम इसी मेरा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है. इसी है, ठीक है. तो यही प्रोजेक्ट आप वो 4th ईयर में, फाइनल ईयर में ही करने का प्लान है, या क्या प्लान है आपका? मेरा प्लान, मैंने अभी जस्ट मैंने बिहार स्टार्टअप को लिए भी मैं ये दिया था प्लान. तो बिहार में एक स्टार्टअप पॉलिसी चलती है 10 लाख रुपए मिलते. आपका 4th ईयर का भी प्रोजेक्ट है ना? हाँ, वो कुछ और प्रोजेक्ट बनेगा उसका, ये प्रोजेक्ट नहीं मेरा. ठीक है जी, ठीक है. ये मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट है, मार्क्स लेने के लिए प्रोजेक्ट देंगे. अच्छा, ठीक है. तो आपको अभी कॉलेज खत्म करने के बाद क्या प्लान है? आपको जॉब करने का है या बिजनेस करने का है, या आगे पढ़ने का सोच रहे, क्या है? मैम मुझे ये निकलना है कॉलेज से, उसके बाद मुझे बिजनेस करनी है, चाहे वो इन्वेस्टर पैसा चाहे अपना पैसा हो, लगाना है बस. मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और फैमिली क्या कर रहे हैं? पापा फार्मर है, भाई मेरा एक इंजीनियर है, वो सिस्टर मेरी यूएसए में. ओके. भाई क्या कर रहा है? भाई मेरा बीटेक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियर है. ठीक है. नहीं, मैंने अभी, आप श्योर है आफ्टर कॉलेज आपको बिजनेस करने का है? 100% मैम, नो डाउट. जॉब में इंटरेस्ट नहीं है और आगे पढ़ने का अभी नहीं. मैं आज तक प्लेसमेंट का फॉर्म नहीं भरा. ओके, वेरी गुड. ओके. तो अभी ये मैकेनिक का सर्विस जो बना है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें ही बिजनेस करने का या कोई भी बिजनेस करने का है? नहीं, पहले मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे अभी प्रेजेंट में. ठीक है. तो मैं लोकल सिटी में काम कर रहा हूँ, लोकल सिटीज में.
मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको ना एक्सप्लेन बड़ा करना है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए। मैं बिहार गवर्नमेंट भी सपोर्ट खोज रहा था, ताकि तो पैसा चाहिए मुझे। आपको जी। कॉम्पिटिटर्स के बारे में लाइक कुछ एनालिसिस किया है जो कोई और हाँ। कर रहा है? नहीं, एक कॉम्पिटिटर है जिसका नाम अर्बन क्लैप है। अर्बन क्लैप सर्विस देती है, सिर्फ वो मेंटेनेंस देती है, वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं काम करती है। हाँ, वो सिर्फ मेंटेनेंस देती है। मैं मेंटेनेंस के साथ साथ आप जैसे कि कोई घर बना रहे हैं, तो उसमें से आपका एक रूम है, तो आप कैसे लाइट दोगे, कैसे क्या दोगे, वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही आप मेरे ऐप पे जाओगे, उसका वीडियो अपलोड करोगे, तो ऑटोमेटेड बैकएंड टीम्स आपको खट आ जाएगा, वहां पे आपको आ जाएगा कि कहाँ पे कितना लाइट रहेगा, कहाँ कितना क्या क्या रहेगा, वो अपने आप आपको आ जाएगा। और अच्छा, उसको ठीक है। सर्विस क्या करना है, मेंटेनेंस कैसे होगा, सभी कुछ का। दो स्टेप का सर्विसिंग तो ज्यादा लोग है ना अभी, वो 24/7 कार बाइक रिपेयर सर्विस का ज्यादा लोग है ना अभी? हाँ मैम, वो सब टायर 1 टायर सिटी के लिए, 2 टायर सिटी कोई नहीं है मैम। तो आपका टारगेट ऐसा टायर 2, 3, 4 हाँ, का सिटी? फर्स्ट मेरा नहीं, मेरा फर्स्ट टारगेट है, मैं लोकल सिटी टारगेट करें, जो भी मार्केट बढ़ रही है, बहुत से पटना सिटी में जो बढ़ रही है, तो हम ऐसे एक छोटा सिटी करेंगे, तो मुझे कुछ गलती होगी जो सीख मिलेगी मुझे, तो वहां से सीखेंगे, फिर बड़ा मार्केट जाएंगे। ठीक है। पर अभी छोटा मार्केट जो नहीं है। अभी कौन सा स्टेज में है? आपने वेबसाइट या कुछ बनाया अभी तक, या क्या स्टेज में है? जैसे कि मैम, मुझे वेबसाइट के लिए मैंने दिया हूँ, वेबसाइट ऐप डेवलप के लिए, तो उसके लिए मुझे 1,10,000 रुपये पेमेंट करना है, तो वो करना है। उसके बाद मैं भी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हूँ, जैसे कोई मैं कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उस पर काम हो रहा है अभी। ठीक है। तो मेरे को एक दोस्त है, वो ऐप डेवलपमेंट में है, ठीक है? तो अंकुश उसका नाम। तो मैं क्या करती हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करके, वो वेब ऐप डेवलपमेंट में ही काम बहुत साल से कर रहा है। तो वो आपको ये ऐप में कैसे, मतलब आसान में बनाने का, ये क्या प्लान करने का, वो थोड़ा क्वेश्चंस है, वो पूरा आपको मदद करेगा। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये पहला बात है। दूसरा क्या है, थोड़ा आप वो जो आप सर्विस दे रहे हैं, लाइक मैकेनिक का उधर पहुंचने का, अगर कुछ रिपेयर है या कुछ है, वो फोटो करके डालते, तो आप मैकेनिक उधर भेज रहे, बराबर? यही आपका सर्विस है ना? ओके। तो अभी जैसा ओला उबर है, इमीडिएटली कैब आ रहा है, इमीडिएटली एक कैंसलेशन नहीं तो दूसरा आ रहा है, ऐसा आपका बड़ा सेम। हाँ, इतना बड़ा, क्योंकि मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं रहेगा ना, कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं, मेरा पार्टनर बेसिस में बना रहा हूँ। जैसे बहुत सारे यहाँ पे जो है ITI होल्डर्स हैं, उनको स्किल है, लेकिन वो कोई स्किल ही नहीं है, कस्टमर बिहेवियर को पता नहीं है कैसे क्या था। कुछ के पास तो सब कुछ है, उसके पास टूले नहीं है, तो सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। मेरा पार्टनर भी मेरा कस्टमर है। आपको इतना वो जो मैकेनिक्स है वो ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। वो मैकेनिक क्यों आपके पास आके वो उसका प्रोफाइल डालते हैं, या क्यों इधर वो काम करते हैं, या आपका प्लेटफॉर्म में क्यों आने का उसको, ऐसा पूरा बिजनेस मॉडल करने का है, बराबर? सो ये इसमें थोड़ा आपको मदद चाहिए, वो पूरा स्ट्रक्चर करने का, ये कैसे लाने का, इतना लोग को, वो मैकेनिक सबको इधर प्लेटफॉर्म में। अगर ज्यादा मैकेनिक है तभी आपको लाइक फटाफट आपको सर्विस दे सकते हैं। कोई सर्विस ढूंढते तो इमीडिएटली आपका सर्विस पहुंचना पड़ेगा, तो वही पूरा सक्सेस का बात है। तो अभी मैं बुकिंग किया तो इमीडिएटली मेरे को आता है, तो मैं दूसरा लोग को बोलती हूँ मैं ऐसा सर्विस लिया है, तो तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करने का, पहला मैं अंकुश से बात करती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ। वो थोड़ा वो आपको वेब डेवलपमेंट, वो बिजनेस भी कर चुका है, 2-3 बिजनेस किया है उन्होंने अभी, तो उसका बिजनेस में भी लाइक नॉलेज है, और ऐप डेवलपमेंट उसका एक्सपर्टीज है। तो ये दोनों आपको वो पूरा हेल्प करके आपका जो आइडिया है वो थोड़ा फाइन ट्यून करके बिजनेस मॉडल बना के आपको वो मदद करेगा। तो पहला मैं उसका नंबर देती हूँ आपको, आप कॉल बात करो, मैं कॉल भी सेट करती हूँ। तो उसके आगे हम क्या करेंगे, फिर से फाइन ट्यून करके आपको क्या चाहिए,
क्या क्या हम कर सकते हैं वो प्लान करेंगे सेकेंड। यस मैम। ठीक है, और कोई हेल्प आपको चाहिए या क्या चाहिए आपको अभी? नहीं मैम, जैसे कि मुझे ये सब ऐप डेवलपमेंट बाकी मॉडल तैयार तो मेरा है, मैं अच्छा पीपीटी बना के मैं अपना कुछ लीगल एडवाइजर्स भी है मेरे कांटेक्ट में, तो कौन कैसे करेंगे, बहुत से गो मैकेनिक कंपनी, गो मैकेनिक में उसमें जो हेड मैनेजर उसमें मेरे ही संपर्क के लोग हैं, तो उनसे भी मैं बात किया हूँ, तो मॉडल तैयार करके मुझे दिए हैं कहाँ से बैंक कस्टमर बनेगा। हाँ, गो मैकेनिक हम भी जानते होंगे सर्विस, वहाँ का दिल्ली हेड मैनेजर जो है वो मेरे गाँव के, मेरे ही विलेज के हैं, तो मैं उनसे भी बात किया। हाँ, तो मैंने उनसे भी शेयर किया, तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किए, कैसे क्या करना है नहीं करना है, कहाँ पे। हाँ, उसके बाद मैंने जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो सबके हाँ, साथ बात करने मैं का। सबके तो साथ, आप जानते हो बायजूस कंपनी जो है लर्निंग ऐप है, उसमें एक लीगल एडवाइजर कुंदन मिश्रा, वो मेरे अंकल हुए, तो मैंने उनसे भी बात की, बोले कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट से देख लेंगे, बस वो भी बताएं क्या लीगल प्रोसेस है इंडिया के अंदर। अभी आपका टीम कैसा है, मतलब आपके साथ काम करने वाले लोग कैसा है, टीम कैसा बना है? सभी में जितना भी है, इंजीनियर है, कोई एमबीए है, ये सब है मेरी टीम, जो मेन टीम रहेंगे, बाकी तो एम्प्लॉय कुछ सेल्स बनाएंगे, एमबीए वाले कुछ सेल्स डिपार्टमेंट में हेड बनेंगे, तो सब डिपार्टमेंट जो आपका कुछ साथ में करने का दोस्त है या कुछ आपने बना के रखा है, मतलब वो लोग हायर करेंगे वो छोड़ दो, वो एम्प्लॉइज वो छोड़ दो, लेकिन नहीं ये सब हम हायर नहीं करेंगे, ये जो लोग हैं ये हायर नहीं होंगे, कि हेड रहेंगे। आपके पास टीम है अभी या क्या? हाँ, मतलब टीम बहुत जरूरी है। हाँ, टीम है मैम मेरे पास, बस इसको बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, कैसे बड़ा किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, सभी एक्सपीरियंस वाले सब हैं, सस्ते में कैसे कंटेंट मार्केटिंग कर सके, तो इसके लिए पूरे हम लोग लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है जी। हाँ, तो आई थिंक आपका आइडिया और वो टारगेट सब क्लियर है, तो मैं पहला अंकुश का बात करती हूँ, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे, उसके बाद आगे जो आपको चाहिए एक लिस्ट बना के, ये इतना बजट है, इतना दिन हो जाएगा हमको ये ऐप खत्म करने का, और ऐसा हम शुरू कर रहे हैं, ऐसा प्लान बनाने का है। अभी पूरा ऐप खत्म करने तक हम वेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो बड़ा बड़ा कंपनीज है, एयरबीएनबी जैसा कंपनीज भी है, हमारा सेशन में भी मैम ने बोला वो वेबसाइट के साथ ही स्टार्ट किया, वो ऐप पूरा ऐप बना के स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ वेबसाइट में स्टार्ट किया। तो ऐसा आपने फर्स्ट मिनिमम जो है आप छोटा बजट में करके ज्यादा लोग कस्टमर्स ढूंढ के ज्यादा रेवेन्यू में फोकस किया, तो आगे बड़ा ऐप बन सकते हैं। लेकिन पहला मिनिमम बजट में मिनिमम प्रोडक्ट करके मार्केटिंग में फोकस करना, और कस्टमर लाने को क्या है, वो रास्ता क्या है वो क्लियर करने का है हम, उसमें ही आपको रेवेन्यू आते हैं, तो उसमें फोकस ज्यादा डालने का, तो उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो उसमें बजट भी बहुत कम है, और आप उसको प्रमोट कर सकते हैं इजीली। सो ऐसा कुछ टेक्निक्स है, वो छोटा बजट में भी हम करके रेवेन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप रेवेन्यू स्टार्ट किया तो आपको बहुत अच्छा होगा, वो फोकस चाहिए हमको। तो हम उसके साथ बात करेंगे पहला, मैं नंबर शेयर करती हूँ आपको, आप भी बात करो, नहीं तो हम ऐसा जी मीट अरेंज करेंगे। उसके आगे आप लिस्ट बना के वो जो इनपुट्स दिया है वो भी लेके एक लिस्ट बना के, ये प्लान है, इतना दिन में ये खत्म करने का, ये टीम चाहिए, इतना पैसा चाहिए, क्या है वो लिस्ट बना के रेडी करेंगे। उसके आगे कुछ इन्वेस्टर चाहिए या कौन चाहिए, कौन इंटरेस्ट है, वो ढूंढ के हम टीम बना के उसमें काम करेंगे। ठीक है? यस मैम। ओके, और कुछ डाउट्स है आपको? नो मैम, थैंक्स। ओके, ठीक है, मैं अभी नंबर शेयर करती हूँ, आप हम शेड्यूल करेंगे जी मीट उसके साथ, ठीक है? यस मैम।